Hello students. So in the last video I discussed about the general rules for image formation by spherical mirrors. Okay, and in this video I will take image formation by concave mirror. We will discuss 6 cases in this video, and all those 6 cases will be based on the rules which we have discussed in the last video. Okay, so let's start with the first case. First case is when the object is at infinity. Okay, so this is the concave mirror. So when the object is at infinity, we assume that all the light rays coming from the object always travel parallel to each other like this. Okay, so when these parallel beam of light strikes the reflecting surface, after reflection it should pass through focus like this. Okay, so now let us discuss about the nature of image. So the nature of image in this case will be highly diminished or point sized. As you can see here, we have obtained a point here. Okay, so in this case the size of the image is point size. It is very blur, and the image is formed at focus, and the nature of image is real and inverted. Why real and inverted? Because the image is formed in front of the mirror. Okay, so students, you need to understand this thing कि जब भी हम ये 6 cases पढ़ेंगे, okay, और अगर एग्जाम में आपको कोई क्वेश्चन आता है इस पर, तो आपको रे डायग्राम ड्रॉ करना है. सेकेंड, you have to write the nature of image, and in the nature of image you will include these 3 points. Means उसकी साइज क्या है इमेज की, सेकेंड थिंग इमेज की पोजीशन कहाँ है, कहाँ फॉर्म हो रही है. ओके, और थर्ड आप ये बताओगे कि इमेज रियल है या फिर वर्चुअल है. तो ये 3 पॉइंट्स आपको हर केस के लिए याद करने हैं. नाउ मूव टू सेकेंड केस. इन दिस केस when the object is beyond center of curvature, okay, it means object is beyond C, somewhere here. Okay, so I will assume first light ray which is passing parallel to the principal axis. So what the rule says, after reflection it should pass through focus. Okay, now I have got here only one reflected ray, and in the previous videos I have discussed for the formation of image we should have more than 2 reflected rays, intersecting reflected rays. Okay, so in this case also I will need one more reflected ray. So I have assumed this ray, another incident ray, it is passing through focus. So after reflection it will travel parallel to the principal axis, and here I have got my point of image. So here I will obtain my image. Okay, now again nature of image, diminished and smaller in size, as you can compare the size of object and size of image. Second, the position of image. The position of image is, it is formed between center of curvature and focus. Okay, and third thing, again the nature of image, the image is real and inverted because it is formed in front of the mirror. Third case, when the object is at center of curvature. Okay, in this case the object is at center of curvature, so first incident ray is moving parallel to the principal axis. After reflection it will pass through focus. Again I will need one more reflected ray. So second incident ray passing through focus, after reflection it will move parallel to the principal axis. Okay, so at this intersection point I will get my image like this. Okay, now the intersection point is at center of curvature only. Okay, so therefore this case is very important. We have only one case where we obtain the image at the same position of the object. So nature of image, same size object we will get the
the position of image will be at center of curvature and the image will be real and inverted because again it is formed in front of the mirror. Now move to fourth case, when the object is between focus and center of curvature. So basically what we are doing, we are shifting the object towards the reflecting surface. Okay, and you will come to know a very interesting relationship between the movement of object and movement of image on the principal axis. Okay, after we finish all 6 cases. So in this case the position of object is somewhere here. Okay, again a parallel beam of light ray strikes the reflecting surface. It will pass through focus. Okay, I will need one more reflected ray. So here it is one more incident ray strikes the reflecting surface and move parallel to the principal axis. So as you can see here, I have got my point of image, intersection point I have got. So this will be the position of image. Okay, so now you can identify the 3 points related to this image. The image is clearly enlarged. It is bigger than the size of object. Okay, the position of object is, it is formed beyond center of curvature. Clear? And again real and inverted with the same reason. Move to fifth case, when object is at focus. So now you can see we are moving the object towards the reflecting surface of the mirror. So now we have object at focus. Again a parallel beam, after reflection it will pass through focus. Okay, now again I will need one more reflected ray. So I don't have option, means जो लास्ट केस में ऑप्शन था कि हम इंसिडेंट रे को फोकस से पास करा रहे थे, अब इस वाले केस में वो ऑप्शन नहीं है मेरे पास में. ठीक है, तो मैं क्या कौन सा रूल अप्लाई करूंगी, जब इंसिडेंट रे पास होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर से. ठीक है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वापस से वो अपने ओरिजिनल पाथ को रिट्रेस करता है लाइक दिस. ओके, सो इन दिस केस the reflected light rays will never meet each other at any point. Okay, and we assume that the image will be formed at infinity. So the nature is highly enlarged image we will get. The position of the image will be at infinity and the image will be real and inverted. Okay, so इस केस के अंदर हम कभी भी इमेज को फॉर्म होते हुए नहीं देख सकते हैं, बिकॉज इमेज, द पैरेलल बीम ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज विल मीट एट इंफिनिटी, दैट इज बियॉन्ड आवर रीच. ओके, अगेन दिस केस इज वेरी इंपॉर्टेंट and we have lots of practical applications of this case. So this is the last case, when the object is between focus and pole. Here this is the pole of spherical mirror, focus. So object is between focus and pole. A parallel beam of light, after reflection it will pass through focus. Okay, अब फिर से मुझे मैं अपनी इंसिडेंट रे को फोकस से पास नहीं करवा सकती हूँ, तो अगेन आई विल यूज द रूल, जो कि है कि जब इंसिडेंट रे पास होती है सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो वो वापस से अपना ओरिजिनल पाथ रिट्रेस करती है लाइक दिस. ओके, अच्छा, अब आप देखो जो ये रिफ्लेक्टेड रेज हैं ये पैरेलल नहीं है. ओके, बट बिहाइंड, इन फ्रंट ऑफ द मिरर ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी. ओके, सो व्हाट आई विल डू, आई विल एक्सटेंड दीज टू रिफ्लेक्टेड रेज इन द बैक साइड ऑफ द मिरर लाइक दिस. और बैक साइड में यहाँ जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं दे आर इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट एंड दिस पॉइंट विल बी द पॉइंट ऑफ इमेज. ओके, नाउ this case is unique among all the 5 cases. Okay, we have discussed. Unique क्यों है? Because इस केस के अंदर इमेज बिहाइंड द मिरर फॉर्म हो रही है और इमेज क्या है? वर्चुअल एंड इरेक्ट. ओके, सो जो इमेज है
वो क्या हाईली एनलार्ज्ड है, क्लियरली आप देख सकते हो, और इट इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर एंड इट इज वर्चुअल एंड इरेक्ट. ओके, क्लियर? सो ये 6 केसेस हैं रिलेटेड टू कॉन्केव मिरर. नाउ लेट्स मूव टू द एप्लीकेशन पार्ट ऑफ दीज 6 केसेस. यूजेस ऑफ कॉन्केव मिरर. ओके, इसमें से आपको जो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट है, उस स्पेसिफिक पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट के क्या प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं वो आपको याद होने चाहिए. ओके, दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशंस पॉइंट ऑफ व्यू. तो क्या एप्लीकेशन है? फर्स्ट केस, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी. तो इमेज कहाँ फॉर्म होती है? फोकस पे. मतलब जो सारी लाइट रेज है वो कन्वर्ज हो जाती है एक पॉइंट पे. और इस एप्लीकेशन, इस पोजीशन को हम कहाँ यूज करते हैं? सोलर कुकर्स, सोलर हीटर, सोलर फर्नेस. इन तीनों ही डिवाइसेस में हमारी रिक्वायरमेंट क्या है कि वी वांट द लाइट रेज टू बी कंसंट्रेटेड एट अ फिक्स पॉइंट. ओके, तो इन तीनों ही केसेस में ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? सन, दैट इज एट इंफिनिटी. तो उससे जो भी लाइट रेज आएगी आफ्टर रिफ्लेक्शन, इट विल बी कंसंट्रेटेड टू अ पॉइंट. ओके, नाउ सेकेंड केस, जब ऑब्जेक्ट कहाँ हो? फोकस पे हो. तो इमेज कहाँ बनती है? इंफिनिटी पे. ओके, जस्ट रिवर्स ऑफ दिस केस. जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे तो इमेज कहाँ बनती है? फोकस पे. जब ऑब्जेक्ट फोकस पे है तो इमेज कहाँ बनती है? इंफिनिटी पे. और इस केस की एप्लीकेशन क्या है? इट इज यूज्ड एज रिफ्लेक्टर्स इन हेडलाइट्स. जो व्हीकल्स की, 4 व्हीलर 2 व्हीलर्स की जो हेडलाइट्स होती हैं, उनमें जो बल्ब होता है वो बल्ब कॉन्केव मिरर के फोकस पे प्लेस्ड होता है. क्लियर? हैंड टॉर्च, table lamps. Okay, an interesting application, it is used by doctors, ENT doctors and eye specialists. Okay, they use head mirror. It looks like this. Okay, तो ये जो mirror है ये क्या होता है? concave mirror. Okay, and in the concave mirror we have a hole in the center. Okay, now last position, when the object is between focus and pole. Okay, in this case where we get the image? Behind the mirror. Yes or no? We get virtual and erect image when the object is between focus and pole. So what are the applications? It is used in shaving mirrors or dentist mirrors, like this, as you can see in the picture. Okay, so especially dentists use concave mirror for examining the patient. Okay, so I hope the 6 cases and their applications, okay, will be clear to you. And students, again important thing क्या है यहाँ पर कि आपको position of object with their application learn होना चाहिए. Okay, so I hope this concept is clear to you. In the next video I will discuss image formation by convex mirror. Thank you.